Good morning, students. Today we are going to study further. We are going to solve further questions of exercise 1.3. We are starting with question 9. Question 9 is consider f from r plus 2 minus 5 to infinity given by f of x 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible with f inverse of y is equal to under root of y plus 6 minus 1 upon 3. So in this question we have to show that the function f is invertible and we have to also find the inverse of the function. As the function is from set of positive real numbers to minus 5 to infinity, this is domain and this is codomain. For first step we have to show that it is 1 1, or injectivity. We have to prove the injectivity of the function. Let x1 and x2 belongs to the domain of function such that their images f of x1 is equal to f of x2. Their images are same under f, and f of x1 will be 9x1 square plus 6x1 minus 5 is equal to 9x2 square plus 6x2 minus 5. On solving this equation, we will now bring all the terms on the left hand side. 9x1 square minus x2 square we can write, plus similarly 6 into x1 minus x2 we can write in this way. And from these two terms, x1 minus x2 we can take common. x1 minus x2 is equal to 9 into x1 plus x2. This factor will be remained here, and here x1 minus x2 is taken out, plus 6, and the product of these two terms is 0. But this term cannot be equal to 0, because why it cannot be equal to 0? Because x1 and x2 both belongs to the domain of f, and domain of f is a set of positive real numbers. Sum of positive real numbers is positive and we are adding 6 in them. So 9 into x1 plus x2 plus 6 cannot be equal to 0. Therefore, x1 minus x2 will be equal to 0. This implies x1 is equal to x2. So, we are getting if the images of x1 and x2 are same, then the elements are also same. So, this function is 1 1. Similarly, we will prove surjectivity on 2. Let y be any element of the codomain, be any element of the codomain of f, then y will be equal to f of x, where x is any element belonging to domain. And as f of x is equal to 9x square plus 6x minus 5, on solving, it is a quadratic equation in x. This can be written as 9x square plus 6x minus 5, and we will bring y on the same other side. It will become this way. It is a quadratic equation in x. On solving here, we have to find the value of x. On solving this is the coefficient of x square, this is the coefficient of x. It is constant term, and the formula for quadratic equation to solve is minus b. Minus b means minus 6 plus minus under root of b square. What is b? 36 minus 4 into a, 9 into c, minus 5 minus y upon 2a, 9, and x is equal to minus 6 plus minus under root of 36. 9 fours are 36, minus, on taking common minus, it will become plus 36 into y plus 5 upon 18. And we here 36 can be taken out of the under root and it will become 6 minus 6 plus minus 6 into under root of 1 plus 5 plus 5 upon 18.
It can be written as, on taking 6 common and dividing it by 18, minus 1 plus minus under root of y plus 6 upon 3. So this is the value of x. And as x is positive, it belongs to a set of positive real numbers. The value of x will be minus 1 plus under root of y plus 6 upon 3. And here we will see that for x to be positive, this term should be greater than 0. This implies y under root of y plus 6 should be greater than or equal to 1. This should be greater than or equal to 1, and it will become y plus, on squaring both sides, y plus 6 is greater than 1 and y is greater than or equal to minus 5. If we will take this 6 on this hand side, it will become 1 minus 6, and that is minus 5. And this y belongs to the codomain minus 5 to infinity, and it is range of f. It means range of f is minus 5 to infinity. It is equal to codomain of f. Codomain of f. And now we have to find the inverse of f. Y is equal to f of x. Y is equal to 9. Here also we have to find the value of x. 9x square plus 6x minus 5 minus y is equal to 0, and x is equal to minus b minus 6 plus minus under root of b square 36 minus 4 into a into c upon 2a, and it will become minus 6 plus minus under root of 36 plus 36 minus minus plus 36 into y plus 5 upon 18, and x is equal to minus 1 plus minus under root of 1 plus y plus 5 upon 3, and it can be written as under root. We are taking positive sign because x is positive. Y plus 6 minus 1 upon 3, and this is the value of x. And because y is equal to f of x, x is equal to f inverse of y, and in here we can write f inverse of y, and this is the value of f inverse. F inverse of y is under root of y plus 6 minus 1 upon 3. So this is your 9th question. Now we will move to question number 10. Here we have to show that f is an invertible function, and we have to show that f has unique inverse. तो हम इसका कॉन्ट्राडिक्टरी सपोज कर लेते हैं कि लेट g1 एंड g2 आर टू इन्वर्सेस ऑफ f. वी हैव टू शो दैट कि f का सिर्फ एक ही इन्वर्स होता है, हैज़ यूनिक इन्वर्स. तो हम इसे अपोजिट सपोज करते हैं कि लेट इसके दो इन्वर्सेस हैं g1 और g2. बिकॉज दे आर द इन्वर्सेस ऑफ f, therefore their composition f of g1 of y will be f of g1 of y, and because g1 is inverse of f, it will be equal to y, and f of g2 of y, it can be written as f of g2 of y, and f of g1 and f of g2 will be identity function. Why? Because they are inverses of f, and it will be also equal to y. Value of these both composite functions is equal to y.
on equating, this implies f of g1 of y is equal to f of g2 of y, and it can be written as f of g1 of y is equal to f of g2 of y. एज f इज इन्वर्टिबल, क्योंकि f हमारा इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 भी होगा, वो 1 1 भी होगा। और 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि हम दो एलिमेंट्स की इमेजेस अंडर f सेम हैं देन द एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। दिस implies g1 of y is equal to g2 of y. दिस implies g1 is equal to g2। तो जो हमने सपोज किया था कि g1 और g2 इसके दो इन्वर्सेस हैं, तो यहाँ से वो शो हो गए कि दोनों ही इक्वल हैं, इसका मतलब वो सेम है। और इससे हम ये सिद्ध हो जाता है कि इन्वर्स ऑफ f इज यूनिक। In this way we will prove it। And now we will shift to question number 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि f एक फंक्शन है फ्रॉम 1 to 3 to abc, गिवन बाय f of 1 a है, इमेज ऑफ 2 अंडर f is b, इमेज ऑफ 3 अंडर f is c। We have to find f inverse and we have to show that inverse of f inverse का inverse of f is f। So as f is a function from 1 to 3 to abc, this is domain, this is codomain, and in order pairs we can write is 1 comma a first order pair, second 2 comma b, and third ordered pair will be 3c। It means image of 1 under f is a, image of 2 under f is b, image of 3 under f is c। And we are यहाँ हम देख रहे हैं कि distinct value of x, जो अलग वैल्यूज़ हैं x की, जैसे 1 2 3, उनकी इमेजेस भी अलग हैं। फॉर एवरी यूनिक एलिमेंट इन x the images are also distinct, therefore f is 1 1। And similarly for every y belonging to abc there exists a unique element x belonging to the domain such that f of they are having unique images, pre images। यहाँ पर इस कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज उसके डोमेन में ना हो। और रेंज जो हमारी फंक्शन की है, हम ये भी लिख सकते हैं एक लाइन में कि रेंज ऑफ f जो है दैट इज इक्वल टू द सेट कोडोमेन, देयरफॉर f इज ऑन टू। f is both 1 1 and on 2, this implies f is invertible, and because f is invertible therefore f inverse will be a function from abc to 1 2 3, and f inverse of a will be equal to 1, f inverse of b will be 2, and image of c under f inverse will be 3। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेम डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ एक्स, एफ इनवर्स के डोमेन से यदि हम एलिमेंट लेते हैं तो उनकी इमेजेस जो हैं वो कहाँ पर हैं, कोडोमेन है, और डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं। डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन एक्स, देयर आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ वाई इन 1 2 3, तो देयरफॉर इट इज़ 1 1। एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, आप यहाँ रेंज देखो एफ इनवर्स की, वो क्या है 1 2 3, रेंज में ये एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3, दे आर सेम एज इट्स कोडोमेन। तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ इनवर्स, देयरफॉर एफ इनवर्स इज ऑन टू ऑल्सो। अब ये पहले हमने शो किया कि एफ 1 1 है ऑन टू, अब उसका इनवर्स भी 1 1 है और ऑन टू है, बाइजेक्टिव है। और किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए, इन्वर्टिबल होने के लिए उसको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब क्योंकि एफ इन्वर्स भी हमारा बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो एफ इन्वर्स इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, therefore f inverse is invertible, and f inverse will be a function from, अब जो f inverse का कोडोमेन है वो f इनवर्स के इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन 1 2 3 हो जाएगा, और ये उसका कोडोमेन हो जाएगा, और इट इज सेम एज f।
तो therefore we have proved f inverse of inverse is equal to f. Next question is question number 12. Here f is a function from x to y, b an invertible function. ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है. हमने शो करना है कि जो f इन्वर्स का इन्वर्स होता है वो f है. f इन्वर्स का इन्वर्स किसके बराबर है? f के. क्योंकि हमें दिया हुआ है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y एंड इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन. इन्वर्टिबल है तो इट विल बी 1 1 एंड ऑन 2. दिस इम्प्लाइज f इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2. तो उसका इन्वर्स f क्योंकि x टू y फंक्शन है तो उसका इन्वर्स विल बी अ फंक्शन फ्रॉम y टू x. देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f इन्वर्स फ्रॉम y टू x सच दैट यदि f ऑफ x y है तो x क्या होगा? f इन्वर्स ऑफ y. x क्या होगा? f इन्वर्स ऑफ y फॉर x बिलोंगिंग टू कैपिटल x. स्मॉल x हम कैपिटल सेट x से ले रहे हैं और ये y एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, हम सेट कैपिटल y से ले रहे हैं. तो अब हमने ये जो f इन्वर्स है इसको शो करना है कि वो 1 1 और ऑन 2 है. तो हम ऐसे दो एलिमेंट्स ले लेते हैं y1 एंड y2 बिलोंगिंग टू कैपिटल Y सच दैट उनकी इमेजेस क्या है? अंडर f इन्वर्स सेम है. इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस अंडर f इन्वर्स क्या है? सेम है. क्योंकि यहाँ पर हमने 1 1 किसका प्रूफ करना है? f इन्वर्स का. और इन दोनों एलिमेंट्स पर हम f का फंक्शन लगाते हैं एंड इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ f इन्वर्स. It is equal to f of f inverse. This is also equal to f of f inverse and it will become f of f inverse of y1 is equal to f of f inverse of y2. As we know, f inverse is inverse of f. Their composition function will be an identity function. हमने ये definition में पढ़ा है कि if f is a function from a to b and g is a function from b to a, then g is inverse of f. Inverse of f if f of g or f of g will be identity element on b and g of f will be an identity element on a. तो उनका कंपोजिट फंक्शन किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी फंक्शंस के. तो यहाँ पर f ऑफ f इन्वर्स किसके बराबर है? आइडेंटिटी फंक्शन के. क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शंस हैं तो उनकी इमेजेस ऑफ y1 अंडर आइडेंटिटी फंक्शन एंड इमेज ऑफ y2 अंडर आइडेंटिटी फंक्शन विल बी y1 की इमेज अंडर आइडेंटिटी फंक्शन y1 होगी और y2 की इमेज अंडर आइडेंटिटी फंक्शन y2 होगी. तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि यदि y1 और y2 की इमेजेस अंडर f इन्वर्स इक्वल हैं तो वो एलिमेंट्स भी हमारे y1 और y2 भी इक्वल है. दिस इम्प्लाइज f इन्वर्स इज 1 1. सिमिलरली क्योंकि f ऑफ x y है तो x क्या है? f इन्वर्स ऑफ y. फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू capital Y, there exists x belonging to capital X such that x is equal to f inverse of y. जो f इन्वर्स की रेंज है वो किसके बराबर आ रही है? f इन्वर्स की जो रेंज है वो कैपिटल सेट x के बराबर आ रही है. उसके सारे एलिमेंट्स किस में होंगे? कैपिटल x में होंगे. देयरफॉर f इन्वर्स ऑन 2 भी है. f इन्वर्स इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2. देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल एंड f इन्वर्स का इन्वर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. और अब हमने यहाँ पर शो करना है कि f इन्वर्स का जो इन्वर्स होता है वो f के बराबर होता है. तो यहाँ पर हमने कंपोजिशन किसकी लेनी है? f और f इन्वर्स की. तो f ऑफ f इन्वर्स ऑफ y विल बी इक्वल टू f ऑफ f इन्वर्स ऑफ y और f इन्वर्स ऑफ y किसके बराबर होता है? x के बराबर. तो हमने पुट कर दिया f ऑफ x एंड f ऑफ x किसके बराबर होता है? y के. तो दैट इज इक्वल टू y. तो f ऑफ f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू
y. It means f of f inverse is an identity function on set y, and this implies f is inverse of f inverse, and it can be written as inverse of f ka inverse is equal to f. F is equal to its double inverse, we can say, and hence proved. Thanks for today. Have a nice day.